हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सो इफ यू डोंट नो मी, आई मेक वीडियोज ऑन डेंटिस्ट्री, डेंटल रिलेटेड व्लॉग्स, videos related to jobs and BDS as a profession itself. So today's topic will be about mucormycosis. So recently ये देखा गया है कि I have seen in my OPD as well as other cases are also being reported in which the COVID patients, like who in the second wave, like who had got COVID in April or May. So in those patients, what is happening actually, particularly those kind of patients who are immunocompromised due to diabetes, especially diabetes, and whenever they are going for any kind of dental treatment, for example extraction, so many cases have been reported in which the tooth has been extracted and the wound is not healing since 1 month or 2 months. It's very often like many patients are coming like this. So अभी क्या हो रहा है कि in those cases, recently 2-3 cases had come to my clinic and also in the hospital, in which what had happened is whenever we are doing the KOH preparation, it's coming negative, but whenever we are doing the CT scan of the patient, it's coming positive for mucormycosis. And you will say why in CT scan how it's visible. So there are many clinical characteristics which with which we can know that it's a case of mucormycosis. Plus KOH preparation में उतना नहीं दिखता है. You have to do a biopsy for mucormycosis. So let me tell about short brief history, like what and all will happen in a patient and what and all we should do in as a dental faculty, as a dental surgeon. So कोई भी COVID patient का आता है, if the patient, you have to ask the history of hospitalization of the patient. अगर hospitalization है तो you have to see the age of the patient. Even young patient like 35, 45 में भी हो रही है. तो सबसे पहले ट्राई टू अवॉइड एक्सट्रैक्शन इन म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट्स, क्योंकि रिसेंटली अभी जो मैंने बोला आपको यही हो रहा है. प्लस क्या हो रहा है कि हम कोई भी प्रोसीज्योर कर रहे हैं तो एक बार हिस्ट्री ये पूछ ले कि स्टेरॉइड यूज पेशेंट में हुआ नहीं था, यूज हुआ है कि नहीं. अगर डेक्सामेथासोन कोई भी लंग प्रॉब्लम की वजह से या फिर लंग फाइब्रोसिस की वजह से, जो कि कोविड में काफी कॉमन है, अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट किया गया है, स्टेरॉइड यूज दिया गया, प्लस पेशेंट इज डायबिटिक, डोंट डू एक्सट्रैक्शन फॉर एटलीस्ट अ ईयर. So usually you prefer root canal treatment for those kind of patients, and whenever the patient is coming for pain. So regarding this condition, like we are also not very sure, not enough research has been done on this, ki post COVID after 2-3 months whenever patient is coming for extraction. So this is being just reported. So इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को सतर्क करने के लिए बना रहा हूँ. हालांकि म्यूकोरमाइकोसिस मोस्टली अफेक्ट्स द मैक्सिला, तो बी मोर केयरफुल फॉर मैक्सिलरी टीथ. हालांकि व्हेन द टूथ इज पेनिंग एक्सट्रीमली यू हैव टू रिमूव, बट ट्राई इफ यू वांट टू रिमूव लोअर मोलर्स, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट. बट म्यूकोरमाइकोसिस मेनली अफेक्ट्स द मैक्सिला, ओटोराइनोसेरेब्रल वेराइटी. ओके, सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इन म्यूकोरमाइकोसिस, यूजुअली इट हैज बीन सीन पेशेंट्स विद डायबिटीज. एंड ब्लैक फंगस जो नेम है वो एक मिसनोमर है. ब्लैक फंगस नेम इसलिए है क्योंकि उसमें ब्लैक डिस्चार्ज निकलता है, क्योंकि it affects our nasal cavity, nasal turbinales. So what happens is patient will feel nasal congestion in the head, and there will be redness in the eyes. Usually it affects the base of the skull. अब इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है, जो पार्ट में म्यूकोरमाइकोसिस है उसको पूरा निकाल देते हैं. अगर आपको क्लिनिकली देखना है कि म्यूकोरमाइकोसिस कैसा दिखता है, usually it is seen as a area where the gingiva and the palatal gingiva, buccal mucosa का gingiva सारा recede कर जाएगा, and you can see the yellowish bone underlying the tooth socket. आप एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, उसके बाद नॉर्मली क्या दिखता है कि पूरा रेडिश एरिया जो होता है, जो फ्लैप्स होते हैं बकल एंड पैलेटल फ्लैप्स, वो आप क्लोज कर देते हैं और बीच में एक दिखता है क्लॉट जैसा दिखता है कि नहीं वैसा. और अगर हम बहुत दिन पेशेंट को और 5-6 दिन बाद बुलाते हैं तो क्या होता है कि वो और ज्यादा हील हो जाता है, और जो डिप्रेशन है, जो एक्सट्रैक्शन सॉकेट है, दैट फिल्स अप विद कनेक्टिव टिश्यू एंड द वुंड गेट हील्ड. बट इन दीज काइंड ऑफ केसेस यू विल सी द पैलेटल म्यूकोसा, बकल म्यूकोसा इज मूविंग अवे फ्रॉम द टूथ. Okay, I'll show you a picture also. I have posted earlier in Instagram also. It's moving away from the tooth, and the area becomes totally white, yellowish. The bone will be seen underlying the particular area where you extracted the tooth. So today's video is all about this. And mucormycosis का पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ. अगर
आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, व्हाट आर द ओरल मैनिफेस्टेशंस एंड व्हाट एंड ऑल हैपेंस इन म्यूकोरमाइकोसिस, हाउ विल यू नो। एंड प्लीज डोंट पैनिक। आजकल लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं कि क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, थोड़ा सा रेनी सीजन है, तो क्या होता है कि सो थ्रोट हो जा रहा है। अब सो थ्रोट में येलोइश जैसे दिखता है, एक्सुडेट निकलता है हमारे टॉन्सिल से। So that is basically Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus acting, that bacteria acting on our region. So acute streptococcal infection is mainly caused by Streptococcus mutans, aureus, Staphylococcus aureus group of bacteria. So that's why it causes that yellowish discharge, or sometimes it appears yellow in color. Sometimes it can be a lith stone also, tonsillolith, which appears yellow in color. तो लोगों को लगता है येलो फंगस, व्हाइट फंगस हो गया उनको। So don't panic, just go to an ENT doctor, get yourself tested for COVID. So it's no need of like you have to panic and you got COVID and you got, ऐसे इतना easily mucormycosis और ये सब नहीं होता है। तो take care, have a very good day, do follow me on Instagram, sai_dental. Have a very good day, love you all.